So here it is, customer. What customer is asking? Yesterday we were just reading that there are two girls friends and they are planning to visit Berlin. So at the end उन्होंने डिसाइड किया था कि हम लोग ट्रैवल एजेंसी में जाते हैं, वहां जाके डिस्कस करते हैं कि हमें कहाँ घूमने जाना चाहिए, कौन सा बेस्ट रहेगा। सो सेम थिंग यहाँ पे हम कंटिन्यू करते हैं कि जब वो ट्रैवल ऑफिस में पहुंचते हैं तो बीइंग अ कस्टमर, बीइंग अ ट्रैवलर, उनके लिए क्या क्या क्वेरीज, क्या क्या सेंटेंसेस हो सकते हैं, एंड सेम टाइम ट्रैवल एजेंसी वाले या फिर ट्रैवल ऑफिस से क्या क्रॉस क्वेश्चंस आते हैं। सो हियर इट इज, Ich möchte eine Reise buchen und zwar nach. I want to book a trip and namely to. Swarnak means namely कहाँ के लिए आपको बुक करनी है, एंड फिर उस पर्टिकुलर सिटी का नाम आप यहाँ पे बता सकते हो। एंड इससे पहले ट्रैवल ऑफिस वाले भी आपसे पूछ रहे हैं, wohin möchten Sie denn fahren? Where you want to travel? आप किधर घूमने जाना चाहते हो, या और wann möchten Sie denn fahren? When you want to go, when you want to travel, and wie lange möchten Sie denn fahren, and how long you want to travel. तो बेसिकली 3 क्वेश्चंस राइज ब्यूरो से आते हैं, कहाँ जाना चाहेंगे, कब जाना चाहेंगे, एंड कितने टाइम के लिए जाना चाहेंगे। कितने टाइम मतलब 1 week, 2 weeks और 2 days और only weekend. Yes. And the same time they can also ask you, waren Sie schon mal in Frankfurt, waren Sie schon mal in Schweiz, were you already in Frankfurt या फिर were you already in Switzerland. So ऐसे क्रॉस क्वेश्चनिंग वो आपसे कर सकते हैं। सो अगर आपने पहले से डिसाइड कर रखा है तो आप उस सिटी का नाम भी बता सकते हो कि आई एम planning to travel and basically I would like to go to Hamburg only. Yeah. So was können Sie mir empfehlen? आप मुझे क्या रिकमेंड कर सकते हो? haben Sie noch andere Angebote? जब आप पूछते हो कि आप हमें क्या रिकमेंड करोगे, तो बेसिकली ट्रैवल ऑफिस वाले आपको बताते हैं कि करंटली हमारे पास ये ऑफर है, ये पूरा फैमिली प्लान है, ये एक कपल का पैकेज है, इसमें 5 days 6 nights का है, इसमें फ्लाइट्स इंक्लूड है, होटल स्टे इंक्लूड है, ट्रैवलिंग टिकट्स इंक्लूड है, और अदर एंट्री चार्जेस जो भी होंगे different museum and historical places की, so everything is included in this along with the 3 meals. तो जो भी उनके ऑफर हैं वो आपको एक्सप्लेन करते हैं। उसके बाद फिर से कस्टमर कह रहे हैं, haben Sie noch andere Angebote? It means क्या इसके अलावा आपके पास और भी ऑफर्स हैं? haben Sie noch andere Angebote? Do you have another offers? क्या आपके पास और भी ऑफर्स हैं? सो उसके बाद अगर कोई फर्दर ऑफर्स हैं तो ट्रैवल ऑफिस वाले आपको बता सकते हैं। अदरवाइज वो आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि इफ यू वांट टू गो विद द ट्रेन देन हाउ वुड यू लाइक, सो वी वेयर एज मिड ट्रेन, मिड फ्लू, फ्लाइट का पूछे तो मिड फ्लू, या अगर आप ट्रेन से जाते हो, अगर आप फ्लाइट से जाते हो तो कैसा रहेगा? Das kann ich sehr empfehlen. That I can recommend you. वह मैं आपको अच्छा और बहुत अच्छे से रिकमेंड कर सकता हूँ। और they can also tell you where haben da ein gutes Angebot. There we have a very good offer. So in between जब भी आपको लगे, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी हो सकता है, वो लिख दास होटल, होटल कहाँ पे सिचुएटेड है, कहाँ पे लोकेटेड है, या फिर आपका क्वेश्चन हो सकता है wie lange dauert die Fahrt oder der Flug, जर्नी जो है वो कितने ड्यूरेशन की होगी, फ्लाइट जो होगी उसमें कितना टाइम लगेगा, how long the journey will take और how long the flight will take, फ्लाइट से कितना टाइम लगेगा
और हमारी जो टोटल जर्नी है वो कितने आवर्स की होगी। तो जो भी आंसर उनका होगा they will let it know. The same time you can ask was costed the rise, पूरी ट्रिप का क्या कॉस्ट होगा। एंड आप ये भी पूछ सकते हो was is the price in big reason, what is included in the price। So वो आपको बता सकते हैं they are often hard costed, जो स्टे है उसका आपका ये कॉस्ट होगा, एंड their price is inclusive frustook, एंड प्राइस जो है वो इंक्लूडिंग फ्रूटुक है, इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट है। अगर वो 2 मील्स दे रहे हैं आपको तो ये कह सकते हैं देयर प्राइस इज हल पेंसियन। मीन्स हल पेंसियन मतलब आपका ब्रेकफास्ट होता है, डिनर होता है, लंच नहीं होता है उसमें। एंड अगर तीनों मील इंक्लूड है, लंच, ब्रेकफास्ट एंड डिनर, तो वो कह सकते हैं देयर प्राइस इज इंक्लूसिव फुल पेंसियन। ओके, das muss ich mir noch mal überlegen. That I must think again. और आप कह सकते हो कि हाँ इसके बारे में मुझे फिर से सोचना पड़ेगा। Dann würde ich die Reise nachnehmen. So dann würde ich Reise nach, just like आपने finally decide करा कि मुझे फ्रैंकफर्ट जाना है, तो आप कह सकते हो dann würde ich die Reise nach Frankfurt nehmen. Dann würde ich die Reise nach Paris nehmen. It's up to you. Yes. Here, wollen Sie hier etwas fragen? All your doubts, please, you can ask. Any doubt here? No? Yes or no? Please give your response. Yeah. So related, one exercise we are doing in the Arbeitsbuch. This is Aufgabe 6a, and this is here we have again something from Reisebüro. Gespräch im Reisebüro. Was passt? What fits here with A, B, C, and 1, 2, 3, 4, 5. So you have to listen and control it. So this, like such, can be the suitable sentences. What you have to do? I'm giving you 2 minutes. Quickly read all the options, all the sentences available, and you can do on your own opinion also कि किस अपना अगर फर्स्ट सेंटेंस ये है तो ABC में से कौन सा सेंटेंस नेक्स्ट हो सकता है. But I am giving you 2 minutes only. After that, I will play the track. Listen carefully and please mark the suitable one option. Hallo, guten Tag. Was kann ich für Sie tun? Guten Tag. Ich möchte mal an der Ostsee Urlaub machen und suche für mich und meine Freundin eine kleine Ferienwohnung. Was machen Sie denn gern im Urlaub? Was für Wünsche haben Sie denn? Also, wir möchten nah am Meer sein. Für meine Freundin ist es auch wichtig, dass sie viel Sport machen kann. Da kann ich Ihnen eine neue Anlage auf Usedom empfehlen. Da haben wir schöne, moderne Ferienwohnungen. Sehen Sie hier. Das sieht ja ganz nett aus, aber es ist auch so groß. Ich hätte lieber etwas mitten im Ort, nicht außerhalb. Ach so, Sie möchten lieber in einem Ort sein. Kennen Sie Ückeritz? Da gibt es einen schönen alten Ortskern. Aber da sind Sie nicht direkt am Meer. Das macht nichts, wenn es nicht zu weit weg ist. Wir haben die Fahrräder dabei. Weit ist es nicht zum Strand, 2 Kilometer etwa. Wie gefällt Ihnen dieses Haus? Mit nur 3 Ferienwohnungen, frisch renoviert. Oh ja, das gefällt mir viel besser. So habe ich mir das vorgestellt. Und was für Sport kann man da machen in Ückeritz.
Da können Sie surfen, Tennis spielen, schöne Ausflüge mit dem Fahrrad machen und noch einiges mehr. Wann wollen Sie denn hinfahren? Das wissen wir noch nicht genau, aber wahrscheinlich in der letzten Juniwoche. Da würde ich Ihnen aber empfehlen, schnell zu buchen, denn für diese Zeit sind viele Wohnungen schon belegt. Ja, ich verstehe. Ich möchte das meiner Freundin zeigen und dann entscheiden wir uns ganz schnell. Ich gebe Ihnen noch ein paar Prospekte mit. Und das ist meine Nummer. Sie können mich jederzeit anrufen. Ah, vielen Dank. Auf Wiedersehen. Aufgabe 6a und b. Hallo, guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Was kann ich für Sie tun? Ja, also, wir würden im Juni gern zusammen in Urlaub fahren. Aber da gibt es ein Problem. Ich möchte mich gern erholen und ausruhen. Am liebsten an der Ostsee. Ja, und ich finde es total langweilig, immer nur am Strand zu liegen. Ich würde gern einen Stadturlaub machen. Am liebsten in Berlin. Jetzt suchen wir etwas, was uns beiden gefallen könnte. Und wir wollten uns mal erkundigen, was für Angebote Sie so haben. Also zur Erholung kann ich Ihnen die Insel Rügen empfehlen. Wir haben da wundervolle Ferienwohnungen direkt am Strand. Da können Sie sich entspannen. Und vielleicht können Sie ja auf dem Weg dorthin ein paar Tage in Berlin bleiben. Was kostet denn so eine Ferienwohnung? 500 € pro Woche. Das klingt ja ganz gut. Aber Rügen? Haben Sie noch andere Angebote? Natürlich. Wie wäre es denn mit diesem Wellness-Hotel in Berlin? Da hätten Sie ganz viel Erholung und sind trotzdem mitten in Berlin. Das ist doch eine gute Idee. Was meinst du, Paula? Ja, das könnte passen. Kann man da auch Sport machen? Das wäre doch auch wichtig für dich, Anna. Ja, natürlich. Es gibt ein Schwimmbad und einen Fitnessraum. Die Benutzung ist im Preis inbegriffen. Auch die Halbpension. Und was kostet das? Für eine Woche 800 € pro Person. Vielleicht wäre auch eine Flusskreuzfahrt etwas für Sie. Es gibt Touren auf der Spree, die beginnen und enden in Berlin. Da können Sie die Stadt besichtigen. Auf dem Schiff können Sie sich ganz gut ausruhen, aber Sie erleben auch etwas. Besuchen verschiedene kleine Orte im Spreewald, sehen verschiedene Landschaften. Ich habe hier zum Beispiel ein tolles Angebot. Die Tour dauert 7 Tage und kostet 1.100 € pro Person. Ach, das hört sich ja gut an, ist aber zu teuer für uns. Ich habe auch nicht so große Lust, den ganzen Tag auf einem Schiff zu verbringen. Am besten finde ich... Aufgabe 6. So here lesson is our new topic for today. Lesson always comes with the verb infinitive. Basically, before you start this lesson, you must know what are the sentences where we need two verbs. हमारे पास कौन कौन सी सेंटेंस स्ट्रक्चर्स है जहाँ पे हमारे पास दो वर्ब होती है एक सेंटेंस में. तो हमने मोडाल वर्ब सीखी थी. मोडाल में हमारे पास वर्ब इन्फिनिटिव होती है. उसके बाद हमने परफेक्ट सीखा था. परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब होती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म भी होती है. देन थर्ड हमारे पास ऑप्शन था फ्यूचर. फ्यूचर के सेंटेंसेस हम जब भी बनाते हैं तो वर्डन प्लस वर्ब इन्फिनिटिव यूज करते हैं. And now we have lesson plus verb infinitive. So modal की तरह एक और ऐड कर सकती हूँ कि जब भी हम lesson यूज करेंगे हमें हर बार
verb infinitive use करनी है. So now see the conjugation of lassen verb. I just need 2 minutes, guys. I have a call and you people can go through the whole page. So here, first of all, we have the conjugation of verb lassen. Ich lasse, du lässt. Er, sie, es, Name und man lässt. Ihr lasst, wir, sie, lassen. ये है conjugation lassen verb का. Lassen का हमेशा verb infinitive के साथ यूज होगा, लेकिन किस सेंस में यूज होगा? To let someone to do something. किसी पर्सन को कोई काम करने देने के लिए. To get something done from someone. कोई काम किसी अदर पर्सन से करवाना हो तब भी आप यूज कर सकते हो. And to leave means just like leave me alone in my room. Yeah, so in that case, leaving वाले केस में भी आप lassen को verb infinitive के साथ भी यूज कर सकते हो. And now we want to see some sentences here. First of all, we are having the sentence in presence. Presence always we have subject, then we will have lassen, time, object, and verb infinitive. So just like there is a sentence, ich wasche selbst meine Kleidung. I wash myself my clothes. क्लॉथ्स जो है मैं खुद वॉश करती हूँ. मैं मेरे क्लॉथ्स खुद वॉश करती हूँ. यहाँ पे एक्टिविटी मैं खुद कर रही हूँ, लेकिन जब कोई काम मैं खुद नहीं करती हूँ, किसी और से सर्विस लेती हूँ, हर बार मुझे वहां लासन यूज करना है. तो यही सर्विस कपड़े धोने की अगर मैं किसी और से लेती हूँ तो मेरा सेंटेंस होगा Ich lasse meine Kleidung waschen. Ich lasse meine Kleidung waschen. I let or I get my clothes washed. मैं मेरे कपड़े वॉश करवाती हूँ. This will be the meaning. Ich mache meine Hausaufgabe. I'm doing my homework. But मैं खुद नहीं कर रही हूँ, किसी और से करा रही हूँ, तो सेंटेंस होगा Ich lasse meinen Bruder meine Hausaufgabe machen. I let my brother do my homework.
मैं मेरे भाई को मेरा होमवर्क करने दे रही हूँ, या फिर मैं मेरे भाई से मेरा होमवर्क करवाती हूँ। Ich fahre mein Auto. I ride my car. Ich lasse dich mein Auto fahren. I let you ride my car. I let you ride my car. मैं तुझे मेरी कार चलाने देती हूँ या दे रही हूँ। Ich schneide meine Haare. I cut my hair. यहाँ पे एक्टिविटी खुद कर रही हूँ. I cut my hair. But normally I don't cut my hair. I get it done. या आप किसी और से कटिंग कराते हो हमेशा. So ich lasse meine Haare schneiden. So basically वो सारी एक्टिविटी, वो सारी सर्विसेज जो आप खुद नहीं करते हो, किसी और से करवाते हो, उस केस में आपको लासन का यूज करना है, और लासन के साथ साथ वर्ब इंफिनिटिव आएगी हमेशा। जैसे कि कपड़ों को आयरन कराना, हेयर कट करवाना, जैसे कि गाड़ी की रिपेयरिंग करवाना, या so these are the activities basically people get done from other people. Now one more sentence. Mein Vater lässt sein Auto reparieren. My father let his car repair. मेरे पापा अपनी गाड़ी रिपेयर करवाते हैं। Meine Mutter lässt unsere Kleidung bügeln. My mother lets iron our clothes. मेरी मम्मा हमारे कपड़े आयरन करवाती है। Ich lasse Tom jeden Tag mein Zimmer aufräumen. I let Tom every day my room cleaned. So मैं मेरा रूम टॉम से हर रोज साफ करवाती हूँ या फिर करने देती हूँ। I get it cleaned. I get my room cleaned every day from Tom. जिस भी पर्सन से आप काम करवा रहे हो वो थर्ड प्लेस पे आएगा। सब्जेक्ट हमेशा आप है यहाँ पे, और या फिर कोई भी पर्सन जो एक्टिविटी यहाँ पे करवा रहा है, जिससे भी करवाया जाएगा वो पर्सन थर्ड प्लेस पे होगा और वो एक्यूजेटिव फॉर्म में होगा। एंड ये सारे सेंटेंस है प्रेजेंट के, तो प्रेजेंट में नॉर्मल लासन प्लस इंफिनिटिव। अब इसी के काफी और एग्जांपल्स मैं यहाँ पे आपको शो कर रही हूँ, आप एक बार इनको गो थ्रू कर लीजिए एंड देन विल डिस्कस द मीनिंग। बाकी जो स्ट्रक्चर्स है, जैसे पास्ट में है मोडाल वर्ब के साथ, प्रेजेंट में भी है, प्लस परफेक्ट में भी है, एंड प्लस इम्पैरेटिव भी है। बेसिकली इम्पैरेटिव जो हम किसी को ऑर्डर देने के लिए यूज करते हैं उस केस में भी है। Yes, these all sentences and to understand the meaning. Here, lesson with modal verb. अगर lesson भी यूज करना है प्लस modal verb भी आ जाती है तो आप क्या करेंगे? modal verb हमेशा प्रायोरिटी में रहती है, तो यहाँ पे भी आपको modal का रूल अप्लाई करते हुए modal को पहले यूज करना है एंड verb infinitive lesson एंड में चला जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 3 verbs in a single sentence. Ich möchte heute meine Haare schneiden lassen means you can say I want to get my hair cut today.
आज मैं मेरा हेयर कट करवाना चाहती हूँ। अब यही सेंटेंस अगर मुझे पास्ट में बोलना है तो यही सेंटेंस आपका हो जाता है। म्योष्ट का पास्ट फॉर्म हम यूज करते हैं वोल्टन। So ich wollte gestern meine Haare schneiden lassen. Yesterday I wanted to get my hair cut. Yeah. Kannst du mein Auto reparieren lassen? Can you repair my can you get my car repaired? क्या तुम मेरी कार रिपेयर करवा सकते हो? अब यही सेम सेंटेंस पास्ट में बोलना है तो कान का पास्ट फॉर्म कॉन्टेस्ट। Konntest du letzte Woche mein Auto reparieren lassen? Could you get my car repaired last week? Now it comes to the perfect. So basically आपने सीखा perfect में helping verb के साथ में थर्ड फॉर्म आती है, बट यहाँ lesson के केस में helping verb के साथ verb infinitive आती है and lesson आती है, थर्ड फॉर्म नहीं आती है। यहाँ पे पेटिट्स वाई नहीं आएगा, थर्ड फॉर्म नहीं आएगी, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब, इन्फिनिटिव एंड लासन। लासन कंप्लीट आएगा यहाँ पे। So, ich habe gestern Abend meine Kleidung waschen lassen. I have got my clothes washed yesterday in the evening. Mein Bruder hat mich letzte Woche sein Auto fahren lassen. My brother has let me ride his car last week. मेरे भैया ने मुझे लास्ट वीक अपनी कार चलाने दी या चलाने दी थी, ऐसा भी कह सकते हैं। Meine Mutter hat mich gestern putzen lassen. My mother has let me clean yesterday, or you can say my mother got cleaning from me yesterday. मेरी मम्मा ने मुझसे कल, पुत्सन मतलब होता है सफाई, पोछा लगवाना, क्लीनिंग एंड लासन मीन्स करवाई। Are these sentences clear? Please Yes. confirm. Okay. So remaining, if I think about imperative, so imperative यहाँ पे जो हमारे पास है हमेशा किसी न किसी टाइप का ऑर्डर या रिक्वेस्ट देने के लिए यूज होता है। So here the sentence is lassen Sie mich allein, leave me alone. यहाँ पे lassen Sie mich allein का जो सेंटेंस है कंप्लीटली फॉर्मल वे में है। तो फॉर्मल में हमने यहाँ पे lassen प्लस जी दोनों को यूज किया है। फॉर्मली हमने lassen एंड जी। अगर यही चीज इनफॉर्मल होता है तो हमें जी को नहीं यूज करना होता है इनफॉर्मल में, एंड लास्ट की जगह, लासन की जगह सिर्फ लास्ट होता है। उस केस में सेंटेंस हो जाता है इनफॉर्मली लस मिश अलाइन, लिव मी अलोन, मुझे अकेला छोड़ दो। और जब आप लासन जी मिश अलाइन बोलते हो इट मींस इट्स फॉर्मल, एंड फॉर्मल में आपको मीनिंग होता है आप मुझे अकेला छोड़ दो। So now next sentence, can someone please read? I think Archita you can read and translate. Also tell me informal way of the same sentence. Lesen Sie mich gern? Please allow me to go. Yeah. I'm informal. Lassen. It is lassen Sie mich gern. Lassen Sie mich gern. Allow me to go. Or let me go. Or let me go. Informally, what will be the sentence? Informally will be, okay, let me go. With imperative or without imperative? Imperative only.
Lassen Sie mich gehen, same sentence अगर informally आपको बनाना है तो क्या बनेगा? Okay, informally. तो last मिश के हैं. Yeah, lass mich gehen. Let me go. Okay, now Astha, read the next. Tell me the meaning. Also, tell me the formal way of saying the same sentence. Astha, are you there? Hemlata, you can do the next two. Shubham, let's do the next two. Last mention रूह है. Let me go. Aha, what is the meaning of ruh? रूह है. Ruh means peace, Peace. quietness. Let me peace. Let me, or you can say, leave me in peace. Please, मुझे शांत जगह पे छोड़ दो. Lass ihn allein arbeiten. Let him work alone. Yes, let him work alone. Perfect. Then the next. Lassen Sie mich hier Auto fahren. Drive your car. Let me ride the car. Okay, let me ride your car because it is here Auto fahren. Yes, ma'am. Okay, sehr gut. Lassen Sie mich das machen. Let me do this. यहाँ है formal sentence. इसका informal lass mich machen. Lass mich das machen. Let me do this. Actually English में meaning formal informal दोनों का same होता है. But sentence German में two different हो जाते हैं. Lassen Sie mich das machen and lass mich machen. Let me do this. Lass mich dir helfen. Let me help you. Lasst uns Urlaub machen. Let us do the holidays. Last uns, यहाँ पे last है, मतलब मैं तुम सबको कह रही हूँ कि तुम सब लोग हमें holidays पे जाने दो, holidays spend करने दो. Or we can say lasst uns Urlaub genießen. Genießen is to enjoy. So let us enjoy the holidays. बेसिकली इंपैरेटिव तीन ही केसेस में होते हैं. 100% फॉर्मल lassen Sie and informal las. Informal plural last. Yes. Now, any query if you have, you can ask me, please. Heutiger Hausaufgabe, Aufgabe 9a und b. Varsha, you are going to update in the group. I hope you are there. Varsha is not there. Archita, would be great if you can update in the group today. Yes, ma'am. Aufgabe 9a und b. Kursbuch. Have you marked? Yes, ma'am. Aufgabe 12a. You all have to read and you have to mark richtig oder falsch. So 12a und b. Sorry, 14a und b. Seite Nummer 13. Same book Kurs. Then Arbeitsbuch. Arbeitsbuch, you have the homework. Aufgabe 8a, 9a.
8a und 9a, Seite Nummer 82. Yes, now please tell me who has done the exercise 7, exercise, this B exercise. I think yesterday I have given you in the homework. Raise the hand who has done this exercise.